Hastakala Life, and in this episode we are going to talk about fashion and the power of color and fit. किस तरह से कौन सा कलर आपके ऊपर जचेगा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है जब हम कहते हैं स्टाइलिंग इज एन आर्ट। और ये आर्ट आपको किस तरह से फॉलो करना है, और इसके लिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ है मिस मंजुश्री पाटिल एंड डॉक्टर सुप्रिया देशमुख। सो लेट्स बिगिन। कलर एंड फिट, ये दोनों पे हम बातचीत करेंगे, मगर सबसे पहले आपके वार्डरोब में या आपके घर में कपड़ों की कितनी सारी वर्सेटैलिटी होनी ज़रूरी है। जैसे कि बहुत सारे कपड़े नहीं या बहुत सारा ज़्यादा क्लोथिंग नहीं, मगर कुछ तो जो आपके पास होना ही चाहिए। So you were talking about the color. Yes. I think black is something that goes from day to night. Yeah. That's for sure. I think black, nobody can go wrong with black. White also. White also, Yeah. yes, definitely, yes. And I also feel nowadays people are using a lot of metallic tones. They also look very good. Manje like plain metallic tones, like you have a silver tussar fabric or a golden tussar fabric. Yeah. They just wear that plain sari in gold or silver tussar, and then just accordingly wear a jewelry. So that looks beautiful and it looks really nice. So I think that you can wear the silver one for the day and the gold for the night. Also works really well. Okay. So I think like kurtas, saris, and few basic western, three basic things should be there in. I to feel all 3-4 colors should be there in all of them, like a white, a black, a beige, and a grey. Basic. These are basics. Yeah. But, what about the bright colors? Like, Yeah. I like neon colors personally. Oh wow! Okay. I'm sure they look good on you as well. But So that's again the thing, do I look good when I see myself? And जो clothes मैं पहनती हूँ, ये हमें कभी भूलना नहीं चाहिए कि मेरे पहने हुए clothes जितने मुझे अच्छे लगने चाहिए, उतने सामने वाले जो मुझे देखने वाले हैं दिन भर, उनको भी उतना ही अच्छा लगना चाहिए मेरे कपड़े देख कर। बिकॉज अदरवाइज मुझे सिर्फ अच्छा लगा है, आई डोंट केयर अ डैम ऑफ द पीपल अराउंड मी, ऐसे करके तो नहीं चलता है। सो कलर का मैंने पहले भी दोहराया है, मैं फिर से यही दोहरा रही हूँ, बिकॉज आई ट्रूली बिलीव इस बात में कि कलर और फिट ये दोनों ओकेजन से ही तय होते हैं कि मैंने क्या कलर पहनना है। कभी कभी एकदम ब्राइट स्पार्कलिंग कलर पहन के हम निकलते हैं घर से और पता लगता है कि यार ये सूटेड नहीं था इस ओकेजन के लिए, थोड़ा सा टोन डाउन, थोड़ा सा मेलो डाउन। सो वो जरूरी है। और स्किन टोन, जो इसने बहुत बार शी इज बीन कॉन्स्टेंटली आल्सो टॉकिंग अबाउट स्किन टोन एंड शी इज द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट इट। स्किन टोन मुझे मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि मुझे कभी ये दिमाग में था नहीं कि मैं फेयर हूँ। बचपन से मैं मदर हैज केप्ट, बट फॉर सम रीजन मेरी माँ मुझे रेड कलर नहीं पहनने देती थी। मैंने मेरी पहली रेड साड़ी पहली रेड क्लोथिंग बहुत शादी के बाद, बहुत सालों के बाद खरीदी। क्यों? क्योंकि शी न्यू दैट इट यूज्ड टू मेक me stand out too much. So red color मत पहनो, ये उसका था। I'm not saying whether that's right or wrong, but the thing is हर एक ने, अगर आप ये जो देख रहे हैं, मैं इन्हें जरूर ये कहूँगी कि आपकी स्किन टोन को डिसाइड करके आप कलर पहनेंगे, तो ये आपको मिरर में ही पता चल जाएगा कि ये क्या जच रहा है, क्या नहीं जच रहा है। ट्रेन के बारे में बोलते हैं, when in doubt wear red or wear black. That's अच्छा, completely true. ब्लैक और रेड आपके ऊपर कितना सूट करता है वो भी बहुत जरूरी है। I think when it comes to choosing the outfit now, whether the color or the fit, I think there are two types of consciousness a person has to have: conscious about self and conscious about the external factors. Correct. So conscious about self is what is my skin tone and what is my body type. Correct. And external consciousness would be what occasion am I wearing for, what is the weather, where I'm going, and what is the audience, what are the people whom I'm going to meet. Is it going to be my family members? Is it going to be stranger? Is it going to be a social event where I rarely know anybody? I think these internal and external 2-3 questions, if you get the answer, then I think it's very easy to choose. She's very right, because मैं हमेशा जब साड़ियाँ कभी देख रही हूँ, सलवार कमीज देख रही हूँ, तो मैं typically I'm not talking about westerns or Indo-western, तो मैं ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, पर ये जब देखती हूँ तो हाँ, ये ना बड़ा कॉन्फिडेंस टाइप का कलर है।
ये मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाता है कि अरे हाँ ये बिल्कुल ये मेरे म्यूजिकल कॉन्सर्ट के लिए अच्छा कलर है, या ये स्टेज पे पहनने के लिए अच्छा कलर है। ये मैं बहुत सोचती हूँ जब मैं कलर सिलेक्ट करती हूँ। ऑल्सो मैं एक बात हमेशा ध्यान में रखती हूँ कि हाउ मेनी कलर्स डू आई ऑलरेडी हैव, डू आई हैव 5 of these yellow sarees and I will not buy another one। कि कितना हाउ मच कैन यू होल्ड, होल्डिंग नहीं करना है कि ठीक है मेरे पास अलग अलग कलर्स होने चाहिए, वैरायटी होनी चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट फिट। फिट भी बहुत जरूरी है। अगर मतलब सो एज दे से ड्रेसेस शुड बी टाइट इनफ टू शो यू आर अ वुमन एंड ड्रेसेस शुड बी लूज इनफ टू शो यू आर अ लेडी। वाओ, तो ये बिटवीन द लाइन जो है ना, ये हमें फाइंड आउट करना है। वेरी ट्रू कि टाइट और लूज किस तरह से हम बैलेंस कर सकते हैं, इसके आप ऊपर क्या बात करें? Yeah, I think fit should be. My personal style is a modest fit only. I think there are very few occasions that would justify very tight fitting clothes. I think a bachelorette maybe where you're hanging out with your friends and or something very very personal where you're with your friends or a group of your sisters where you wouldn't care who's judging you, who's not. There I think you can go That all out. Yes, very casual. yes, and definitely if you're going for work, then you have to dress modest. If you're going for a conference, you have to dress modest. But I think fit is very important. You cannot have a very baggy looking outfit on you. It makes you look casual. It has to be proper. A shirt should look like a shirt. A well-fitted shirt will always make a man stand out from a person who is wearing a very very loose-fitting, ill-fitting shirt. So yes, fit definitely matters. It is, I think, one of the most important things. And many people have the body type where just they can pick up the clothes from the shelf and it fits beautifully on them. And there are certain body types, like my body type, I have to get my clothes tailored. Unfortunate. Yeah, but I have to do that because off the shelf, यहाँ पे fit होगा तो यहाँ पे fit नहीं होगा. I get that a lot for my body type. So I have to get them tailored. So I think it just grows from your own consciousness, what you are, and then you can decide. Clothes fit, clothes color के बारे में जब हम बात करते थे, recently मैंने एक large group of teachers के साथ training conduct किया, तो उसमें मैंने उनको 4 categories बताए about clothing and about music. So I said, ये 4 categories आप हमेशा ज़हन में रखिए. Keep it in mind that there is casual dressing, there is informal dressing, there is semi-formal dressing, and there is formal dressing. And with these 4 in mind, you need to keep your color and your fit and your choice of clothes. So इसके definitions probably आगे जाके मैं बताऊंगी क्या exactly है, पर ये याद रखना जरूरी है कि मैं जो पहन रही हूँ वो कौन से टाइप का occasion है. Casual है, semi-formal है, informal है, semi-formal है या formal है. Yes. ये gradient है. So from my perspective, fashion is not only like hot pants and crop tops. Fashion can be sari. Styling can be something ethnic you are wearing. So that can also be a fashion. A quick question. Street shopping or a brand shopping? I think a balance of both. Oh, yeah, because sometimes you really get very good outfits on the street or online. And again, you have to know where to buy from. You've tried them, you've probably tried and tested, made some mistakes, then okay, this online brand really works for you. And brand shopping, yes, but I think brand shopping, the occasion should justify for the money you're going to spend. Also, once you spend on a very expensive outfit, the repeatability is very important for me, at least. So if I have to go for a brand or if I have to go for a particular designer, I would also choose an outfit which is very versatile, which I can wear again and again. Correct. It should be OTT. Correct. So I think that is something that I would. And here I'm going to also bring into thought the concept of the psychology behind the brand. Being a psychologist myself, I definitely want to say just having a brand, because everybody else will think good or great about you, that I'm wearing a Jimmy Choo or I'm carrying a whatever. I don't think we want to go down that route, because what happens is it's a never ending bottomless pit
of fear and insecurity कि मैं brand नहीं पहन रही हूँ या पहन रहा हूँ. Absolutely. Wear what you like. You pick up. I love a sari from Hastakala. I will go and pick it up. Right. I will not think about the price. I know it's a sari. Wearability, Yeah. repeatability. Yeah. I know a sari from Hastakala that I pick up, I will wear again and again and again because it's so gorgeous. Every time I wear it, somebody is going to say, "Wow, this is so beautiful." Absolutely. Bas मैं I'll pick it up. I know I'll get some premium stuff over there. Sometimes I'm not in a mood or I don't have the budget to spend that much money. So I'll pick it up from a local place here and there. Picking up stuff should not be done on this, this whole fear and insecurity. Yes, yes. ब्रांड मैंने पहनना चाहिए, नहीं तो लोग मेरे बारे में कम सोचेंगे. That's all. Then only your wardrobe will be budget friendly. Yeah, Yes, exactly. absolutely. Like a mix. Like she rightly said कि अगर आपको it warrants it, कर लो. If you feel कि इसका utility है उतना पैसा खर्च करने के बाद जरूर करो, क्यों ना करो. Yes. So आपको भी बहुत सारे questions जरूर होंगे about fashion, about styling, about your own personality. आपको किस तरह से boost करनी है, ये confidence किस तरह से बढ़ाना है और क्या fashion में हम कर सकते हैं, इसके लिए आपके questions comment section में जरूर डालिएगा. And like, share, subscribe our channel. See you in the next video.